that the concerns about adverse effects, serious problems, as of now seem to be unfounded, negligible, insignificant, and the data shows that we are in a situation of lot of comfort. And we would like to reassure you with data that you have seen that these two vaccines are safe. They do not excite undue reactogenicity and are being accepted increasingly. We may also point out to you that the proportion of AFI that you saw, and I was looking at some of the papers on Pfizer, Moderna vaccines, वहाँ serious adverse event typically 0.6% रिपोर्ट किए हैं, 0.6%. और अगर आपने अभी देखा तो 0.18 तो सारा AFI है, और उसमें सीरियस वाला तो ना के ही बराबर है. ये भी आपने देखा, वो 0002 जिसके लिए अस्पताल जाना पड़ता है. तो कोई डाउट नहीं है कि जिन प्लेटफॉर्म्स पे ये दो वैक्सीन बने हैं, आई थिंक दैट हैज बिकम वेरी क्लियर टू मी as well, in particular when you look back now, that these two platforms produce vaccines that are highly immunogenic, both for antibodies and T-cell, but also, so having adults being vaccinated, two made in India vaccines, negligible, उससे भी कोई नीचे कोई term हो तो वही इस्तेमाल करनी चाहिए, side effects, and serious side effects practically nil. I'd like you to take forward. And that should lead us to believe that if we are given an opportunity to be vaccinated as per the priority list, which was developed in consultation with the state governments and was shared at the highest level with the state leadership, then those of us who are fortunate to be listed to be receiving vaccination, please, we should not refuse. We should not refuse. There are two reasons, among others. One, when you receive vaccine, which is now assigned to you, you protect yourself and you can perform your functions without fear of contracting COVID. And we are talking about healthcare workers at this time in particular. You protect your family. I'm wondering why we don't want to do it if there are these doubts. But also, once an individual is protected, the virus then cannot cross that individual. Conversely, if an individual who should have been protected because the vaccine was available to him or her does not take the vaccine, predisposes himself or herself to infection, then उनकी प्रॉब्लम तो उनकी है, लेकिन he or she is a medium for spread of the virus, part of the chain of transmission. And therefore, I think we are not fulfilling our societal responsibility if a vaccine assigned to you is not being taken. Please understand, the whole world is clamoring for vaccines. जो हालात है थोड़ा इंटरनेशनल, कल अगर WHO EB की प्रोसीडिंग्स किसी ने सुनी हो, क्लैमरिंग, बहुत बड़ा इशू है कि कैसे ये संभव हो पाएगा कि प्रायोरिटी ग्रुप्स को ही दुनिया भर में वैक्सीन लग जाए. और यहाँ पे वैक्सीन मिल गया, बना दिया देश ने, अपने दम पे बनाया, बहुत अच्छे वैक्सीन बनाए, दो वैक्सीन बनाए, और व्यवस्था ने डोर स्टेप पे पहुँचा दिया. और फिर अगर हम नहीं ले रहे हैं तो ये, और पर्टिकुलरली हमारे हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी, हमारे डॉक्टर्स नर्सेस ये डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये दुख की बात है. और मैं विनती करूंगा सरकार की तरफ से कि प्लीज़ अपनाइए, क्योंकि इस पैंडेमिक ने आगे क्या रूप लेना है ये किसी को मालूम नहीं है. विनती है कि प्लीज़, और हेल्थ स्वास्थ्य कर्मियों ने इसको रोल मॉडल की तरह लेना है, अपनी व्यवस्थाओं में फेथ करके दिखाना है. हमें ज़रूरी है कि हम वैक्सीन अपनाएं. बहुत दुनिया मांग रही है वैक्सीन. आपको